मेरा नाम घनश्याम परसराम आसावा, तालुका उमरी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र। चलते चलते गिर गया और शोल्डर पे प्रॉब्लम आया। फिर मैं नांदेड़ पूरा बताया सभी डॉक्टरों को, कम नहीं हुआ। फिर मैं हैदराबाद आया, अपोलो हॉस्पिटल में। यहाँ डॉक्टर साहब कौशिक साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब को मिला तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोले एमआर निकालो। फिर मैंने एमआर निकाला। एमआर में मेरी नस कट गई थी। नस दुरुस्त के लिए साहब ने ऑपरेशन करो बोले थे, लेकिन ये उम्र में ऑपरेशन टिकता नहीं टिकता ऐसा हमारे सब लोग दोस्तों का कहना था। डॉक्टर साहब ने मेरे को राय दी ऑपरेशन करना ज़रूरी है और ऑपरेशन सिवाय कम नहीं होता। इसलिए हमारे बच्चे का नाम प्रीति सासावा है, उन्होंने आके डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करने की करो बोल के कह दिए। फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब ने जो भी ये करने का है रिपोर्ट ऑपरेशन करने के पहले, वो रिपोर्ट निकाल के चौथे दिन ऑपरेशन थिएटर में मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और मैं हाथ हिला सकता हूँ, उठा सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। मेरे को अब कोई तकलीफ नहीं। ऑपरेशन होके 1.5 महीना हुआ, मेरा सब सक्सेसफुल हो गया और अच्छा हो गया। अब मैं बहुत ही खुश हूँ। अपोलो हॉस्पिटल के लिए मैं बहुत खुश हूँ। Namaste, I'm Dr. Kaushik Reddy, Consultant Orthopaedic Surgeon, Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Today we have Mr. Ghanashyam ji, who is 66 years old male, who has come from Maharashtra. So he came to me with severe pain in the right shoulder. He was suffering from this pain in the right shoulder since 6 months. He had a slip and fall 6 months back, and he went to multiple hospitals, underwent multiple treatments like PRP injections, stem cells, did physiotherapy for a long time, but still he was not getting relief. He was having severe pain in the night, and he was not able to use his right hand. He was not able to lift his right hand. Then when I saw the MRI, he had a complete tear in the rotator cuff muscle in the shoulder, and I advised him to go for an arthroscopic rotator cuff repair surgery. He underwent the surgery. Now it is less than 2 months. It is only 7 weeks following the arthroscopic rotator cuff repair surgery, and he's got an excellent result. He's able to do all the movements. He doesn't have any pain at all, and he's able to sleep in the night without much difficulty. He's able to do all his activities without much difficulty. So that is why patients who have a complete rotator cuff tear have to undergo an arthroscopic rotator cuff repair surgery for early recovery and good outcome. Thank you.